सोती रातों में जागी सी मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है. We want to go out, but we can't. As I stay in hostel, there are some rules which won't allow us to go roam around in the night in the campus. So it is difficult for me as a hostelite to enjoy the night life, and even if we want to stay late at night or stay outside, the procedure is very complicated. You need to fill that late pass thing and out pass thing, and in also while doing that procedure, the response and the treatment from the guards is very harsh, and it's very judgmental. बिल्कुल अकेले तो कभी नहीं गई मैं बाहर. बिल्कुल अकेले रात में क्यों नहीं गए? Legally speaking, there are no restrictions on movement of any individual, whether it is at night or in the daytime. Generally, I am of the opinion that I don't want to test the poison kind of a thing. So I don't go very late at night alone, all alone. कभी लड़का साथ में आते हैं, कभी हस्बैंड आते हैं, कभी बड़ी बेटी आती है रात में 10 बजे के बाद. रात में कोई तो साथ लगता है, अकेली नहीं रुक पाती. I think I can move around late night in Pune, but I need my car. On two-wheeler, I don't think it's safe. And for younger people, younger women, it's definitely not safe. കമ്മ്യൂണിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണെങ്കിലും അത് ദാറ്റ്സ് സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് സിമിലർ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് വിമൻ. We would think twice before getting out at night after 7 p.m. असं काही प्रॉब्लेम नाही येत. व्यवस्थित पोरी वगैरे जाऊ शकतात, काय नाही. पण रात्रीचं वगैरे असेल तर आपल्याला एक सेफ्टी म्हणून आपण त्यांच्याबरोबर जातो, एवढंच. सेफ्टी, हाँ, सेफ्टीसाठी. हम लोग लड़कियों के या औरतों के सेफ्टी की बात करते हैं तो सीधा यही दिमाग में आता है कि ये सेक्सुअल वायलेशन की हम लोग बात कर रहे हैं. तो सेफ्टी का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को कहीं एक्सीडेंट हो जाए या कहीं और कुछ मतलब फिजिकली कुछ प्रॉब्लम हो जाए, इसको हम सेफ्टी मानते ही नहीं है. मतलब ये तो ठीक है, ये हो जाएगा. द मेन थिंग इज सेक्सुअल वायलेशन. तो ये जब तक दिमाग में आता है, दैट मीन्स यू आर नॉट सेफ. बाहर जाना है, ऐसा ही टाइम दिया, इधर घूमो उधर घूमो, ऐसा नहीं करना चाहिए. एक दिन घूमोगे, 2 दिन घूमोगे, किसी को ना किसी को अगर पता चला तो इसका फ़ायदा तो लड़के लोग उठाएंगे ना. बिन ऐसे ही घूम रहे होंगे तो 80 लोग तो ऐसे बोलते हैं. अभी आप एफसी रोड पे जाओ, आपको 90% क्राउड ऐसा मिलेगा ना जो बस इधर मज़े करने के लिए आया है. तो अगर उन लोगों पे रिस्ट्रिक्शन लगता है ना तो वो सही बात है, क्योंकि आप जिस एरिया में रहते हो, जहाँ रहते हो ना, उन लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है. अगर आपको कुछ होता है ना तो आपके घर वाले पहला उनको पकड़ते हैं. अरे आपके भरोसे पे मेरी बेटी यहाँ रुकी थी, हमने हॉस्टल की पूरी जांच की थी, तभी मैंने बेटी को रखा था, हमने ऐसे किया था वैसे किया था. तो उन लोगों की भी 90% रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है. അതായത് സ്ത്രീകളുടെ ശരീരം ഒരു സെക്ഷൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു സൈഡ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഈ രാത്രി പുറത്തിറങ്ങരുത്, ആർക്കെങ്കിലും കാമം തോന്നിയാലോ, ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടാലോ. അപ്പം ഈ ബേസിക്കലി പേട്രിയാർക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ഇനോർമസ് സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ് നീ ഇപ്പൊ പറയുന്ന ഈ വിഷയം. ഇതടക്കം സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിനെ സെക്ഷലൈസ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട്. സ്ത്രീകൾ നടക്കാൻ പാടില്ല, ഇരിക്കാൻ പാടില്ല, ചിരിക്കാൻ പാടില്ല, ചെറിയ ഉടുപ്പിടാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്. അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പാടില്ല. നേരെ കുടുംബക്കാർ പറയുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്നല്ലാതെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു ചോയ്സും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പേട്രിയാർക്കി എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. In Indian society, the woman is supposed to be the basic, what will you say, prestige of the family, you know, कि इज्जत जो घर की महिलाओं और बेटियों में बसती है. So if anything wrong is done with the women or the girls
of the family. The whole family is disreputed because of that, and that is why women have been kept as far as possible for safety's sake away from darkness, so that nobody can put their bad sight on them or whatever. There is no woman found on roads at night. They are not allowed to walk out of the house. If they are going out and it is for their professional purpose, then people are okay. Means family persons are okay and society will always accept it. But if she want to move out of the house just for herself, like for walk or long drive or for having ice cream or pan, anything, so she is not allowed. Here at the hostel we don't have any such restrictions, but for girls there are many restrictions as compared to boys. But in our homes they don't. It depends upon to family, but mostly there's a stereotype that girls should not go outside at night. My parents do trust me till 12 a.m. but I avoid it because they already are in a panic. Like, where is she? How is she? Where is she going? Or they're just concerned about her. Yeah. And why it is so? Because she is there is one syndrome, good girl syndrome. Good girls, they are not just wandering out at night alone, first thing. And secondly, if they have to go out, they must have some bodyguard. That kind of a concept was there in our days. Actually, my father used to say like that. Then we could see that because of the safety reasons, she needs to have some bodyguard. And actually that is not good. And it is because of the double standards. That is what I feel. Because for men, there is no restriction. मतलब if you ask a man that are you safe outside या at home, तो कहीं दिमाग में भी सेक्सुअल वायलेशन की बात नहीं आती है. सो इट्स सो फनी कि मतलब जैसे मैंने कहा कि अंधेरे रास्ते पे जाना है तो मुझे भी अनसेफ लगेगा, कोई आके लूट लेगा, पॉकेट मार लेगा या मगिंग करेगा, मैक्सिमम ऐसा कुछ होगा. तो इस तरह की सेफ्टी की हम लोग बात करते हैं व्हेन मेन आर कंसर्न. बदतमीजी उसी लोगों के साथ होती है जो खुद को बहुत ऐसे कमसिन समझते हैं. अरे नहीं नहीं, कोई अगर मुझे आके बोलेगा तो मैं क्या करूँगी, तो उनके साथ डेफिनेटली बदतमीजी होती है. तो आप खुद कॉन्फिडेंट रहिए. मैं 10 लोगों के बीच भी जा रही हूँ ना, तो किसी की हिम्मत नहीं है मेरे ऊपर करके भी देखने की. Whatever like transportation part, if we see, the accessibility is not that easy, and in many squares there are autos and rickshaws standing and asking for women and girls if they want to go, they want to sit. So that part also includes stalking also. It is humiliating sometimes. They used to follow them for some distance, and they are forcing to be seated in that particular auto also. So that kind of situation is everywhere in Nagpur and in many localities in all the cities equally. വളരെ കുറച്ച് പേരെ ആ സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കൂടിയാണ് അത് മാർക്ക് ചെയ്യാനും അവർ അൺസേഫ് ആക്കാനും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് പറ്റുന്നത്. Because we are working a lot on giving them protection, providing them protection. The government agencies are also working for protection of women and not working on how to provide respect to women, or whatever respect they must have as an individual, that is not being given or identified by the government agencies even. That's why we can see that all programs related to women rights or women empowerment, they are conducted only for women and not for men. I have encountered a few times that when I go out at night, I was feeling safe enough, but there were 2-3 bikers who were guys who didn't do anything to me, but they were talking loudly amongst each other that if their sister was out at night so late, it was 11 p.m, it was not even very late, how would they be scared for her life and what would happen to her. And the discussion itself, there were one biker on my right side and 2 people on my left side,
even though they were not addressing it to me, they weren't even following me, might be, I don't know, but their discussion of what might happen to me if, and how scared would they be if I was their sister, and they weren't even talking to me, got me extremely insecure. ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അൺസേഫ് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും അധികം സ്ത്രീകൾ മരിക്കുന്ന ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് മൂലമാണ്. There are so many examples that I personally saw while shooting for many documentaries. There was one starting example that I remember. I was shooting a documentary about child labor who work in brick kilns, and the girl was like 12 years, and the mother said, I have to take this girl with me because if she comes from school, there is no door, so she's not safe. So that is a very silly thing for safety, door, you know. There has to be so many other things for women to feel safe inside the home, not only door, because they are accused by their own relatives, they're so close men, and even as Sunil was saying, I think it's the patriarchal setup that keeps certain expectations from women. So mother-in-law expects certain thing from daughter-in-law. So if she can't perform, she would not feel safe. So those kind of standards that are expected for the kind of the way you have to look, the way you have to kind of cover your face in certain states of India, the way you have to perform religious rituals, the way you have to, we have not even peeped inside bedrooms of India at all. We don't know how that works there. So marital rape is there, and then domestic violence is there, sexual abuse of child is there, so many things. So the first answer when you ask whether women are safe in India inside the house, I would definitely say no. We see there are many cases where girls are being harassed, abused, and there are violent attacks on girls or women inside home also. So this is not the situation that they are just not safe outside and they are more safe inside house. So at workplace also there are sexual harassment cases, at colleges, schools, everywhere it is there. स्त्रिया ना कमवतायत, शिकल्यात, पण त्यांच्या मनातली भीती अजून गेलेली नाही. आणि ती भीती कशाची आहे? फक्त रस्त्यात फिरण्याची भीती नाही आहे, तर ती भीती लोक काय म्हणतील याची आहे, ती नवऱ्याची भीती आहे, ती मुलांची पण भीती आहे, नातेवाईक काय म्हणतात याची भीती आहे. तर ही भीतीसुद्धा गेली पाहिजे, कारण त्या भीतीमुळे तिला सुरक्षित नाही वाटत, तिला स्वतःच्या घरात पण नाही सुरक्षित वाटत. कारण आज आपल्या समाजात पुरुष काही केलं तरी चालतं, स्त्रीनी मात्र चांगलंच राहिलं पाहिजे, कारण आपण तिला देवी वगैरे असं म्हटलेलं आहे ना, परमेश्वराचा दर्जा दिलाय. तर ती प्रतिमा सांभाळता तिची किती दमछाक होते याचा विचारच नाही आपण करत. आणि मी जे बघतेय की अशा स्त्रिया आहेत की त्यांना स्वतंत्रपणे श्वास घ्यायचा आहे, पण त्या घेऊ नाही शकत, कारण इतकं ते मनावर काय संस्कार म्हणतो ना आपण, ते टाकलेले आहेत की तो पगडा जो आहे तो त्यांना पाऊलच उचलू नाही देत. म्हणजे आत्ता मला समजा वाटलं की मला खूप त्रास होतोय घरात, तिला कुठली भीती असते माहिती का, की मी घरातनं बाहेर पडले तर बाहेरचं जग फार काही चांगलं नाही आहे, मग इथे एकाचाच त्रास सहन करतोय, बाहेर तर असे खूप लोक असे आहेत की जे आपल्याला पूर्ण उद्ध्वस्त करून टाकतील, त्याच्यामुळे मग जाऊ दे, आहे ते बरं आहे. Restrictions are always for women, and that's why it is again gender bias been implemented by all the hostels and institutions where they are putting all restrictions on women, because everyone want to play safe. So for the sake of not only for prestige of the girls and their body, but it is mainly for the prestige of the institution, which they don't want to come into discussion. And that under the garb of keeping it safe, actually what they are doing is moral policing. The problem with this campus is it is not really a gender sensitized space. The problem is they are the very reason they are living in a hostel is for it should be economically cost effective, but economically cost effective is being appropriated with some fascinating idea of security intended towards curtailing freedom. So
that becomes a larger problem. And we are talking of a structural problem, which is not just here globally. The university is supposed to be a space, a safe space, and different space from what the society itself is, in which we have caste, race, and everything. It's a systematic legalization of the practices which are followed in our home. कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीतना जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. Decision making in terms of politics, in terms of social setup, in terms of anything that keeps this social system alive, उसके बारे में जो है वही के वही बोले, ये प्रमोट किया जाता है पर्टिकुलरली फॉर वुमेन. और अगर कुछ अलग से बोले तो इट इज़ नॉट टेकन सीरियसली एंड सेड कि आप बहुत हमेशा यू कीप नैगिंग. ऐसा सोचा जाता है कि दे कांट टेक डिसीजंस, उनको बताया भी जाता है कि यू कांट टेक डिसीजंस, और फिर उनको बिना पूछे पीपल टेक डिसीजंस ऑन देयर बिहाफ. My British friend, she told me that in Cardiff or Sheffield, I don't remember the name of the city, there was curfew for men. Imposed for one night only. Just to realize them that how many restrictions are there for women for so many years. And then she said that because of that curfew, there were no rapes. Nothing of that sort happened, and the women, they were just wandering on the streets and they were very happy. പൂനെയിൽ I was staying in Pune for like a year or so. ആ സമയത്താണ് ഞാൻ വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഫോർ ഫൺ കുറേ പെണ്ണുങ്ങൾ, ഞാൻ രാത്രി 2 മണിക്ക് ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് ആ നാട്ടിലെ സാരി കൊടുത്ത സാധാരണ സ്ത്രീകള് അവിടെ കലിങ്കിലൊക്കെ ഇരുന്ന് കത്തി വെക്കുന്നു, അങ്ങനത്തെ ഇത് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പം എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഈ ആസ് ലോങ് ആസ് ദർ ഇസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ, അത് നമ്മൾ വെറുതെ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാനും കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധർ ചെയ്യാനൊക്കെ വെറുതെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും. ഞാൻ ഒരുപാട് രാത്രികളിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സമയമാണ് രാത്രി സഞ്ചരിക്കാൻ. ഇപ്പൊ രാത്രി ആയിരിക്കും അയാൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത്, അതിലിപ്പോ എന്താ കുഴപ്പം? क्योंकि किसी भी लड़की को अगर आप पूछोगे कि आप खुलेआम घूमना चाहते हो, आपको अलग अलग टाइम पे बाहर जाना, कहीं भी आना जाना, ये फ्रीडम चाहिए या नहीं चाहिए, तो एनी वुमन ऑफ एनी एज विल से कि हाँ मुझे चाहिए. Just one thing I always feel, how it must be feeling for a man to just walk on the street without fear, or just go anywhere without fear. So I always feel that this insecurity or fear, it's not only physical, it's so much emotional. It's constant thought of me being attacked by a man. Maybe not dogs, maybe not animals on the street, nobody else, but men. अभी मैंने घर में बोला कि मुझे नाइट का भी काम है तो मुझे वहाँ पे जाना है, तो अगर घर में किसी ने बोला कि नहीं तू नहीं जाने का, तू लेडीज है, तुझे नहीं जाना चाहिए, वो मर्द का काम है, वो कर सकता है, तो ये थोड़ा गलत भी है. क्योंकि ऐसा नहीं है कि जेंट्स ही जाके बाहर रात में काम कर सकता है, लेडीज भी कर सकती है ना. My younger daughter lives in Amsterdam, and once she told me, "Oh, you know, your mom, last night after the party at 2:30, I walked back home." I was like, that is the place I want young girls to be in. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പെൺകുട്ടികൾ ഇതേപോലെ പെൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റലിന് മാത്രം ടൈമിങ്, ആൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റലിന് ടൈമിംഗ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പം
ഒന്നെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റലിന് ടൈമിംഗ് ആക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളെ ഹോസ്റ്റലിന് ടൈമിംഗ് ഇല്ലാതാക്കുന്നത് സമരം ചെയ്ത് ഐ തിങ്ക് ദേ വോൺ. അത് എനിക്കറിയില്ല, ഐ നോട്ട് കൺഫേം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ആരെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെയാണ് സമീപിക്കാറ്. അപ്പം നമ്മൾ പുറത്ത് പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗേറ്റ് അടച്ചിട്ട് നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റിന്റെ വായിന്നുള്ള എല്ലാ ചീത്തയും കേട്ടിട്ടാണ് പിന്നെ ഈ ഹോസ്റ്റലിന്റെ അകത്ത് കയറുന്നത്. പക്ഷേ ഇതേ സംഭവം ഞങ്ങൾ 4.5 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റി റീസൺസ് ആണ് പാരന്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരും പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ സെക്യൂരിറ്റി റീസൺസ് ഞങ്ങൾക്ക് അന്നും ഉണ്ട്. ആൺകുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ആൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം, ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കർഫ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഇവിടെ പാലിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ പെൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റൽ കൃത്യസമയത്ത് പൂട്ടുകയും സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ഒരു വ്യക്തി ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൺകുട്ടികൾക്കില്ലാത്ത എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത്? അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്. We have conducted one rally in Nagpur which is named Walk for Respect. And many women from all walks of life were there and they participated in that, and we gave a delegation to collector also. I have a plan of a program in Nagpur which is having tea together. Means women should gather there, have tea, and it will be on a tea stall, just a local tea stall, and it will be we are having it on 11:30 p.m. at night. So let's see how response will be there from the women. I have stayed in hostels where we were just allowed to go out once a week, that too only for 5 hours during the daylight. We protested about it, and then it was during that protest one of the teachers said, girls go out of the houses, go out of the hostel in lipstick, and they come back without the lipstick. That means they've done something which is not the only reason why we would like to go out during the day or at night. வாரா தோழி வாராயோ நீ காணாமல் என் போராயோ தன் தெருவில் தெரிய திரிய வளர உரிமை எப்போல் பெறுவாயோ வடிகட்டி கொடியேற்றி கல்வி பெற்று நீய சுதந்திர நாள் கொண்டாடுவாயோ வன சுதந்திரத்தை இழந்தாயோ தேசிய உரிமை மறந்தாயோ சட்டா ஹக் எத்தே ரக் சட்டா ஹக் எத்தே ரக் சட்டா ஹக் எத்தே ரக் சட்டா ஹக் எத்தே ரக். And there was an ad also that they were appealed, women were appealed कि जहाँ भी आप रह रहे हो जस्ट रात को 11-11:30 बजे आप अपने अपने बिल्डिंग के बाहर आके खड़े रहो और वहाँ पे जस्ट थोड़ा नाइटली स्ट्रोल एंड एवरीथिंग, एंड देन द अदर वीमेन फील safe कि yes there are more women and somebody who is walking home alone. That was a beautiful ad, you can check it later. अगर मर्द का भी सहारा ले तो कितने देर तक लेंगे हम लोग, कितने दिन लेंगे? खुद को भी जाना पड़ता है बाहर. वो दुनियादारी समझ में आनी चाहिए कि बाहर के लोग कैसे हैं, कैसे वो बाहर जाएगी तो उसे पता चलेगा ना कि बाहर के लोग कैसे हैं, हमको उनके साथ कैसा रहना चाहिए, कौन से दोस्त बनाने चाहिए, कौन से नहीं बनाने चाहिए. डर के घर में ना बैठे, कभी भी जिसके ऊपर जिम्मेदारी आती है तो उसको काम तो करना ही पड़ता है. ऐसा हर एक काम नहीं है कि दिन में सुबह जाओ और दिन ढलते ही घर में आओ, ऐसा तो नहीं होता. क्योंकि मैं भी जब छोटी सी 10 साल की तब से मैं भी बाहर काम करती हूँ, इसलिए मेरे माँ ने कभी मेरे को बाहर नहीं भेजा, लेकिन मैंने उस वैसा लड़कियों को नहीं रखा. मैं उनको पूरा कब कैसी जिम्मेदारी उठाना पड़े ये टाइम नहीं बता कि नहीं आएगा, इसलिए पूरा बाहर का भी पता होना चाहिए और घर का भी. गलत है ना उनकी सोच. जब काम होगा तभी हम उसको बाहर निकालेंगे, जब उसकी मर्जी होगी तो उसको क्यों नहीं बाहर निकालना, पर उसकी सेफ्टी देख के भी हम उसको बाहर छोड़ सकते हैं ना. And I think parents of young girls also or young women also need to be sensitized. I'll tell you my personal experience. Once my daughter had gone to Korega Park area to a pub and all that, and then she and her friend were
sitting, on the footpath and chatting, because before they parted ways, and then the petrol van came, and they talked about, what are you doing here and all that. Then they said, no, we were just inside the pub, now we are going home, but we were just chatting for a little while and in a very decent position and everything, so there was nothing to be afraid of. So then the police said to my daughter, does your mother know? So she said, yes, here is, I'll call my mother, talk to my mother, and she'll tell you that she knows about it, and she knows I am capable of taking care of myself. And my daughter felt bad that he did not ask the boy whether his parents knew, but if my daughter had the confidence that yes, I have told my parents, so that is the additional, I think, mechanism that will be useful. That I always think if curfew is put on men, women would be more safe. They would be inside the homes, like inside hostels, and men would be inside hostels and buildings. They won't be out on street doing all the dirty work. Women would be very happy staying outside, I think. मतलब हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं जो हमने पढ़ा है, लेकिन हम भी एक लिमिट तक ही कर सकते हैं ना. अगर हमें फैमिली मेम्बर्स फोर्स कर रहे हैं कि नहीं तुम, हाँ हम जो बोल रहे हैं वो वैसे बिहेव करो, तो हम भी क्या कर सकते हैं. इसलिए पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि हमें खुद से, मतलब जो हमारा एक इंडिविजुअल या फिर जो फैमिली है, वहाँ से एक सेल्फ इनिशिएटिव लेके खुद से शुरुआत करनी चाहिए. कुछ तो करना तो पड़ेगा ना. अगर किसी एक ने कदम उठाया तो फिर उसके साथ में एक और जाएगा, एक गया तो दूसरा आएगा, तो थोड़ा तो बदलाव होगा ना. Anything that is designed in the public space needs the involvement of women so that they are able to discuss their requirements, and accordingly public spaces should be developed. म्हणजे आपल्याकडची शिक्षण पद्धती जी आहे ना, त्याच्यात बदल करण्याची गरज आहे मुळात. जी पौगंडावस्था असते, म्हणजे लहानपणातून आपण थोडंसं मोठ्या याच्यात जातो वयात, साधारणतः 12-13 वर्षापासून 18पर्यंत तो काळ खूप महत्त्वाचा आहे. तेव्हा तुमच्या मनावर काय काय ठसवलं जातं, सांगितलं जातं, आणि आपलं शिक्षण पद्धती पुस्तकी आहे बऱ्याच अंशी. आणि पुन्हा घरी आल्यावर काय सांगतात पालक, पुस्तकातलं पुस्तकात ठेव, त्याचं हे करू नकोस अनुकरण. तर पुस्तकं हे फक्त वाचण्यासाठी नाही आहेत, ते तुमच्या जीवनाचा भाग झाले पाहिजेत. त्याच्यामुळे शिक्षण असं पाहिजे की ते करायला उद्युक्त झालो पाहिजे आपण. आणि मग त्यासाठी मला असं वाटतं की जसं डॉक्टर आनंद नाडकर्णींचा जिज्ञासा उपक्रम होता की त्याच्यात काही जेंडर इक्वॅलिटी असेल किंवा लैंगिकतेबद्दलचे प्रश्न असतील, सेक्स एज्युकेशन, हे सगळं अनेक शाळांमधनं चालू होतं. मुलामुलींना काही वाटत असतील त्यांच्या मनातल्या शंका कुशंका, तर त्यांना तिथे उत्तरं मिळत होती, ते बोलू शकत होती. तर असे शाळेमध्ये काउन्सिलिंग सेंटर्स असले पाहिजे. अभ्यासक्रमाचा पण एक असा भाग असला पाहिजे की जिथे इन्फॉर्मल, म्हणजे असं वर्गात बसून काहीतरी घडतंय असं नको, तर ते तुम्हाला म्हणजे गप्पा मारत बोलत असं ते एज्युकेशन मिळालं पाहिजे. आणि तुमच्या दोघांमध्ये काही फरक नाही आहे, मुलामध्ये आणि मुलींमध्ये. तुम्ही दोघंही इक्वली सारखे आहात. एक गांधीयन फिलोसोफर थे दादा धर्माधिकारी, उन्होंने बहुत सुंदर कहा था कि जब तक निर्भयता नहीं होगी तब तक दोस्ती नहीं होगी या मैत्री नहीं होगी. और आगे जाकर वो कहते हैं कि किसी भी लड़की के दिमाग से बलात्कार का डर या खौफ जब तक नहीं निकल जाता है तब तक वो स्वतंत्र नहीं हो सकती. बट अनफॉर्चुनेटली वो डर निकल जाना मतलब यू हैव टू फेस इट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट. हम यहाँ तक ये भी औरतों को कहा जा सकता है कि अगर सेक्सुअल वायलेशन हुआ या कुछ रेप जैसी हादसा हुआ, फिर भी डोंट कंसिडर योरसेल्फ अ विक्टिम. आप फिर भी जी सकते हो. आपको विक्टिम मानना गलत बात है, समाज ने ये सोचना चाहिए कि ये विक्टिम नहीं है वगैरह वगैरह. लेकिन वो वायलेशन तो होता है ना, तो इतना बड़ा इंसल्ट उसकी सेक्सुअलिटी का करना, ये इसके आगे ही हम लोग बात शुरू करते हैं. तो ये सारी फिलोसॉफी को लेकर भी ऐसे लगता है कि लेट्स स्टॉप टेलिंग विमेन अबाउट ऑल दिस थिंग. ये जो भी है वो बात वी शुड स्टार्ट टॉकिंग टू मेन एंड टेलिंग देम कि यू हैव टू चेंज. दैट्स द मेन थिंग.
ഇത്തരം എല്ലാ റെസ്ട്രിക്ഷൻസും നമ്മൾ തന്നെ മുൻകൈയെടുത്ത് നമ്മൾ തന്നെ പുറത്തിറങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു വഴി. പിന്നെ കേരളത്തിലുള്ള സെക്സ് വർക്കേഴ്സിനെയും കേരളത്തിലുള്ള മാർജിനലൈസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീനെയും ഇതേപോലെ ജോലി രാത്രി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഭയങ്കര ഇറെലവന്റും കൂടിയാണ്. ഇറ്റ്സ് വീടും സുരക്ഷയും ഭക്ഷണവും അങ്ങനെ ടൈമിങ്ങും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീകളുടെ വിഷയമാണ് ഇത്. അല്ലാത്ത ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുണ്ട്, അവർക്ക് വീടും ഇല്ല, രാത്രി കിടന്നുറങ്ങാൻ സ്ഥലവും ഇല്ല. അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാത്രി പുറത്തിറങ്ങണോ വേണ്ടേ एनुള്ളത് പല സമയത്ത് ചോയ്സും അല്ല. कसं आहे सांगू का, आता मी मुंबईत बघितलं की मासे विकणाऱ्या बायका किंवा फुलं विकणाऱ्या बायका या कुठून कुठून ट्रेननी पहाटे 5-5:30लाच प्रवास करून मुंबईत दादरला पोहोचायच्या, म्हणजे ट्रेनमध्येच असायच्या. तर यांच्या अंगात ही ताकद, तो कॉन्फिडन्स, ते शिकलेल्या पण कमी असतात, पण त्यांचं शिक्षण या प्रकारे अनुभवातनं होतं आणि त्यांना घर चालवायचं आहे, पैसा कमवायचा आहे. तर तिथे त्या सुरक्षिततेची वगैरे काळजी न करता हे काम करतात आणि त्यांचं मन ठरवतं की अरे आला प्रसंग तर मी 2 हात करीन म्हणून. तर मला वाटतं की म्हणून हे शिक्षण आहे ना तुमच्या कामातून सुद्धा मिळत जातं. तर आपण शाळा कॉलेजमधनं प्रॅक्टिकलसुद्धा हे या प्रकारे करत राहिलो. अनेक शाळा अशा आज आहेत, प्रयोगशील शाळा म्हणतो, कृष्णमूर्तींच्या आहेत, किंवा आपल्या इथे सुद्धा अक्षरनंदन आहे, अरुण ठाकूर यांची आनंद निकेतन नाशिकला आहे, सचिन जोशीची नाशिकला आहे. तर या शाळा ज्या आहेत या शाळांमधनं तुम्हाला शेतीपासून म्हणजे एक स्वावलंबन, स्वाभिमान या गोष्टी त्यातनं पण मिळतात. तर मग तुम्हाला सुरक्षिततासुद्धा तुम्ही कमवू शकता. याच्यासाठी फक्त मी नाही तर मी, आमचं घर म्हणजे माझी फॅमिली किंवा कुटुंब आणि समाज यांचा बरोबरीनं हिस्सा ज्याचा त्याने उचलला पाहिजे. अभी जैसे बाहर जाते हैं पढ़ने को, अभी बहुत सी लड़कियां है कि पुणे में बाहर देश से आती है पढ़ने को, वो किसके भरोसे आती है, खुद के ही इस पे वो पढ़ती है, उनके माँ बाप तो उनके साथ नहीं रहते, तो फिर वो खुद की सेफ्टी खुद ही करती है ना. तो वो पढ़ती है और वहाँ यहाँ आके वो समझती है दुनिया में कैसे जीना है, किस लोगों के साथ कैसी बातें करनी है. तो फिर थोड़ा एजुकेशन मतलब बाहर जाने से, पढ़ाई करने से भी बच्चों को थोड़ा बहुत लड़कियों को समझ में आता है. The only solution is that if there are more women on the streets at night, the streets will be safer for women at night. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.